Ladies and gentlemen, on land, Pakistan Army, led by Field Marshal Syed Asim Munir, inflicted heavy damage onto the enemy through precise targeting, employing unprecedented firepower. Whereas at sea, Pakistan Navy, under the command of Admiral Naveed Ashraf, defended the nation's seaward frontiers and deterred aggression across a turbulent, multi-front regional threat. In the skies, upholding the proud legacy of being second to none and guided by its bold leadership, Pakistan Air Force rose with commanding thunder. ये मार्का नज़्म-ओ-ज़ब्त और बाहमी हम आहंगी की ऐसी बेमिसाल अलामत थी जिसमें हर हिकमत अमली के बर वक्त और मरबूत इस्तेमाल से अल्लाह ताला ने हमें फतह मुबीन से नवाजा. At the heart of this triumph stood the bold and visionary leadership of Air Chief Marshal Zahir Ahmad Babar Sidhu, who spearheaded planning and execution of PF's air campaign by turning its reorientated doctrine into operational reality. He was the architect of PF's transformative modernization, comprising smart induction of our war-winning capabilities and indigenous pursuit of integrated niche and disruptive technologies. In a fierce and unprecedented air battle, featuring the largest and longest BVR engagements involving most modern fighter aircraft, Pakistan Air Force delivered a decisive and resounding blow, downing 8 IF aircraft, including 4 Rafales, 1 Su-30, MiG-29, Mirage 2000, and a Heron UAV. इन्हीं जहतों को उजागर करने के लिए आइए देखते हैं मार्का-ए-हक में पाक फिजाइया के किरदार पर मबनी एक दस्तावेजी फिल्म. There are moments in history when nations are tested, moments when peace is challenged, when sovereignty is provoked, and when destiny calls upon the guardians of a homeland. 1 year ago, Pakistan faced such a moment. What followed was not merely a response. It was discipline forged into action, precision transformed into power, and resolve written across the skies. That defining chapter became known as MARKA-E-HAQ. On 22nd April 2025 at 1400 hours in the northwestern mountainous region of Indian illegally occupied Jammu and Kashmir, a locality bustling with attracting tourists. A premeditated false flag attack by the Indians was launched on their own innocent people, claiming 26 Indian lives. In a blink of an eye, without an iota of evidence, the Indian government started a disinformation campaign to build a flawed and false narrative against Pakistan. With the greatest of respect to the judges, they will not take responsibility for the security situation. These are matters in which the governments and armies must be given a free hand. Anticipating a possible misadventure, Chief of the Air Staff, Pakistan Air Force, activated a calibrated, multi-domain posture. His strategic foresight and commitment to ensure impregnable aerial defense of the motherland translated into a potent application of highest state of operational readiness, embedded seamless integration of multi-domain warfare assets. Chief of the Air Staff remained fully engaged, personally overseeing developments and directly briefing each member of his core team on the operational design and his strategic game plan. This was not a reactive deployment, but a deliberate positioning of all tiers of aerospace power. PAF's manned combat force on alert, unmanned systems for persistent surveillance, space-based assets for extended situational awareness, cyber units securing and probing the digital domain, integrated air defense systems layered for deterrence, and electronic warfare capabilities primed to dominate the spectrum. The objective was clear: maintain full spectrum awareness and be ready with a measured proportionate response to retain escalation control. This did not happen overnight. It was a strategic foresight of PAF leadership, who soon after assuming command of PAF envisioned how the future war between India and Pakistan would look like.
induction of niche technologies based on modern warfare parameters, and their swift operationalization poised PAF to be ready for this moment through a network-centric enabled PAF's own homegrown kill chain, alongside the induction of cutting-edge fighter aircraft like J-10C, JF-17 Block 3, and air defense systems like HQ-9B. Each unit was seamlessly integrated into a multi-domain network of PAF. PAF elite fighter units, especially No. 15 Multi-Role Squadron, equipped with J-10C aircraft, were enabled and trained with a very aggressive mindset and killer instincts through exposure in complex, near-realistic combat scenarios to shoot down the enemy whenever called upon by the nation. Pakistan's armed forces stood forged as a single, indomitable war-fighting machine, disciplined, cohesive, and relentlessly decisive. On land, vigilant formations of Pak Army under the astute leadership of Field Marshal Syed Asim Munir secured every frontier. At sea, guardians of the maritime domain denied hostile designs, whereas in the air, the sword and shield of the nation, Pakistan Air Force, rose with thunderous certainty. This was the power of jointness and synergy. Every movement connected, every domain aligned, every strike carrying the weight of a nation united. On the first anniversary of MARKA-E-HAQ, every member of Pakistan Air Force renews a sacred pledge to remain vigilant in peace, to remain fearless in crisis, and to guard every horizon of the motherland. During MARKA-E-HAQ, PAF Shohada wrote their names in the heavens with sacrifice, securing the honor of our nation. Their silence now echoes louder than thunder, a testament to duty fulfilled beyond fear, reiterating that the defense of Pakistan is inviolable. Its skies are secured by courage, its sovereignty is protected by sacrifice, its future is defended by those who stand watch in silence. And if any adversary again chooses misadventure, they will find Pakistan Armed Forces ready, united in command, steadfast in resolve, and decisive in response. Inshallah, Pakistani nation sleeps in peace only because its guardians remain awake. Pakistan Air Force, pride of the nation. Being the fifth domain of PF's warfare doctrine, its cyber force secured digital infrastructure, communication networks, and remained actively involved in detecting and neutralizing hostile intrusions at any time. This was not just cyber application. This was decisive dominance in the digital battle space, and it continues. आइए देखते हैं इसी हवाले से एक मोन्टाज जिसमें मार्का-ए-हक में पीएफ साइबर फोर्स के किरदार को उजागर किया गया है. After the Pahalgam incident on May 7th and 8th, India crossed the line and conducted aerial strikes against Pakistan. But under the watchful eyes and visionary mind of Chief of the Air Staff, Pakistan Air Force, the engagement became the first ever manifestation of seamless cyber-integrated kinetic operations. Operation Divine Bites had begun. Operation Divine Bites demonstrated a defining reality of effect-based operations. From power shutdowns in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir, Coordination faltered. Response windows narrowed. Even command channels, surveillance systems, and digital media was interrupted at crucial moments, creating cross-domain effects. Chief of the Air Staff, Pakistan Air Force, has redefined the rules of engagement through unprecedented leadership, strategic vision, and an exceptional grasp on emerging threats. By conceiving and executing such a sophisticated operation, he has showcased technological superiority and the ability to anticipate and neutralize adversarial narratives. This was not coincidence, but a unified response executed in layers. The battlefield had expanded beyond land, air, and into networks, systems, and minds.
PAF Cyber Force, developed under Chief of the Air Staff vision, is an embodiment of innovation, decisiveness, and adaptability. And it has shown tremendous results in this conflict. It is a result of his unmatched strategic acumen, which is setting a new benchmark for modern military commands. Under his exemplary leadership and foresight, PAF has evolved into a combat-ready cyber force that has been strategically transformed into cyber-integrated air power for shaping outcomes in an increasingly complex modern warfare. It is no longer just infrastructure, but a complete ecosystem with a rare blend of information exploitation. Wars are no longer just fought, they are written in code. PF has a proud tradition of honoring its heroes for their feats of valor and supreme sacrifices. In continuance of the same spirit, I would now request Chief of the Air Staff to honor these heroes by awarding mementos to the families of martyrs and ghazis. Squadron Leader Usman Yusuf Shaheed, Tamgha Basalat. Chief Tech Aurangzeb Shaheed. Senior Tech Najib Sultan Shaheed. Senior Tech Mubashir Javed Shaheed. Senior Tech Muhammad Ayaz Shaheed. Corporal Tech Farooq Ahmed. Award of mementos to PF core teams. During MARKA-E-HAQ, Operations Branch, led by Air Vice Marshal Aurangzeb Ahmed, ensured synchronized employment of air power across the battle space through meticulous mission planning and force allocation to achieve unified combat effects while preserving strategic flexibility and escalation dominance. PF's integrated air defense under the command of Air Officer Commanding Air Defense Command ensured enemy threats were detected, tracked, and neutralized in time as a unified architecture. It also enabled pinpoint standoff strikes against enemy assets using long-range vectors. Ladies and gentlemen, the Air Defense Team. PF's electronic warfare force orchestrated a spectrum-dominant battle space by deploying sophisticated electronic attack and protection measures, effectively degrading sensors, radars, and communication grids of the enemy. Ladies and gentlemen, the team of EW Force.
Headed by Air Commodore Ataullah Zeib, PF cyber warriors had put in place a robust defensive cyber shield before the battle raged on our eastern border. Its synchronized campaign disrupted the adversary power sector, transportation, energy supply chain, and infrastructure across critical networks, whereas PF's unmanned systems, killer drones, and loitering munitions changed the rules of engagement as they penetrated deep into enemy's territory. PF Space Force, though new in the field, enabled surveillance across the breadth and width of the adversary with real-time imagery. It proved as a force multiplier, tracking enemy deployments and ensuring no threat could hide from its piercing eyes. Ladies and gentlemen, the Space Force. Being the linchpin of multi-domain operations of PF, EW, Space, Cyber, and Unmanned Systems teams were directly guided by Chief of the Air Staff himself, which accrued desired strategic effects during MARKA-E-HAQ. Besides these, Air Intelligence Team, led by then Director General AI, Air Marshal Muhammad Ehsanul Haq, created architecture for a coherent and accurate operational picture, ensuring information dominance by degrading the adversary's situational awareness. Ladies and gentlemen, the Air Intelligence Team. अब मार्का हक में सितारे जुरत हासिल करने वाले शेर दिल शाहीनों को सरबरा पाक फिजाइया एजाजात से नवाजेंगे। Wing Commander Bilal Raza, Star Jurat. Wing Commander Hamad Ibn Masood, Star Jurat. Squadron Leader Muhammad Yusuf Khan, Star Jurat. Squadron Leader Muhammad Usama Ishfaq, Star Jurat. Squadron Leader Muhammad Hassan Anis, Star Jurat. Squadron Leader Talal Hassan, Star Jurat. Squadron Leader Fida Muhammad Khan, Star Jurat. Squadron Leader Muhammad Ashad Amir, Star Jurat. Now, I would request Chief of the Air Staff to address the audience. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Principal Staff Officers, Honorable families of Shohada, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It is my profound privilege and honor to attend the first commemoration ceremony of MARKA-E-HAQ. On this special occasion, I thank all the distinguished guests for joining us today. No doubt, the presence of Shohada families and the war heroes make this event special and memorable for us all. Ladies and gentlemen, Operational MARKA-E-HAQ has great significance in the history of Pakistan Air Force, as indeed our country. After the Pahalgam incident, India immediately blamed Pakistan without evidence and announced some immature and hasty measures which created hostile environment. On the other hand, the government of Pakistan and its leadership also condemned this incident and offered our full cooperation in its impartial investigation. However, considering the escalatory statement of Indian leadership and growing military hype, defense forces of Pakistan promptly
undertook necessary safeguards with highest operational readiness. Immediately, Pakistan Air Force declared highest level of alert, enhancing full spectrum surveillance to ensure complete observation of enemy moves. Ladies and gentlemen, to thwart any hostile intent, Pakistan Air Force maintained a strong defensive counter-air posture through launching of multiple CAP day in and out. We also did time scrambles and round-the-clock surveillance through airborne early warning radar and through our integrated air defense system. Alongside, Pakistan Air Force deployed, integrated, and operationalized its multi-domain assets all across in the shortest possible time to counter any aggression which was evident. IF transport fleet flew over 550 sorties to support large-scale forward deployments of its fleet and offensive weapon system, whereas Pakistan Air Force was observing each and every Indian Air Force move that was being undertaken. Indian Air Force effort to conceal its preparedness and asset were denied through bold counter moves by Pakistan Air Force. Pakistan Air Force undertook aggressive preparatory exercises and deployment in north, south, and center. Predominantly in first phase, we started to deploy towards south with an aim to, pull out the Indian aircraft which was, deployed somewhere in Ambala and Gwalior, and that was their main punch. I'm referring to the Rafale aircraft. While most of their aeroplanes like Su-30, Marai 2000 were deployed starting from Srinagar, Avantipur, Ambala, Adampur, Jamnagar, Sirsa, Bathinda, Nalia, Bhuj, and all areas, except the Rafale aircraft, which was deployed initially in Hashimara, then moved to Ambala, and then subsequently this entire package was moved to Gwalior. And this was one of their tactics to, hide their main force, but because of the PF very aggressive posture toward the south and center, we managed to pull them, and then they started to deploy these aircraft from front to north to south areas. This forced the Indian Air Force to reconfigure and redeploy itself, therefore revealing their posture. At the same time, Pakistan Air Force concealed own deployments, strategy through deception, electronic emission, multiple redeployment, and unpredictable pattern of operation. This all ensured that the adversary remained oblivious of our plans. During this hostile buildup, Pakistan Air Force, being eyeball to eyeball with the adversary, maintained the highest state of readiness and continued to safeguard the aerial sovereignty of Pakistan. Till the wee hours of 7th May 2025, when enemy decided to launch its massive attack comprising multiple packages of high-tech aircraft all across our border from north to south. The move was picked up by Pakistan's cyber warriors much before it was detected by the traditional surveillance grid for Pakistan Air Force. Pakistan Air Force scrambled formation of J-10 and F-16 aircraft to form up strong defensive counter-air with backup of J-17 aircraft. PF Cyber Force launched its offensive targeting Indian communication hubs, power grids, and transport infrastructure, as you have seen in the montage also, causing massive power disruption in different Indian states and key military installation. Degradations of communication forced Indian Air Force to fall back on its SATCOM connectivity, especially towards the northern sector. This multi-domain interplay severely degraded Indian Air Force capability to operate as an integrated network force. What follows was the largest and longest BVR versus BVR engagement in the history of air combat. Despite being outnumbered, ladies and gentlemen, Pakistan Air Force fought aggressively, denying enemy the opportunity to enter into our airspace. The enemy was compelled to stay at a distance from our borders. In desperation, Indian Air Force launched its weapon from a stand of ranges while staying within
its own territory. Immediately, these high-speed projectiles were picked up by our sensors. And to the enemy's utter surprise, Pakistan Air Force, in an unprecedented switch, turns its defensive posture into offensive posture. Pakistan Air Force valiant pilots started targeting enemy top-line fighter aircraft. Within minutes, multiple Rafale jet, Su-30 MKI, Marai 2000, MiG-29, and multi-million-dollar unmanned system were shut down. This devastating blow shocked the enemy, and Indian Air Force was not seen in air for the remaining part of the conflict. When adversary resorted to other domains of unmanned system, it also met the same fate. Out of dozens of drones launched on Pakistan, none was able to return home. Our killer drones, hypersonic missile, and long-range weapon struck 16 enemy air bases within a span of about 8 to 10 hours. Key military installation, BrahMos site, critical command and control center, and 2 of his prized S-400 batteries was neutralized. While Indian Air Force was off the skies with complete air dominance, Pakistan Air Force continued pounding the enemy target all across. The adversary was shocked by the Pakistan Air Force aggressive attack, campaigns against its main bases, and key installation all across sectors. At the core of this success was Pakistan Air Force homegrown kill chain that seamlessly integrated all our operational element into single formidable force package. We employed the element of cyber, electronic warfare, and space along with long-range vectors, unmanned aerial system, killer drones, and loitering munitions. For the first time in the history of air warfare, PF conducted full-spectrum, multi-domain operation. The world was stunned to witness this superb execution of PF operation that were excellently choreographed and flawlessly executed. Thus, Pakistan Air Force strongly displayed its capability, resilience, and dominance in MARKA-E-HAQ, upholding the glorious legacy being second to none. Certainly, this resounding success was the outcome of unified approach by all the elements of national power and above all, Allah's special blessing. Without any doubt, Pakistan Air Force could have gone further, but we exercised responsibility, mature and well-calibrated force application. Pakistan Air Force attacked many high-value and high-visibility targets. Its power and transport system was disrupted, critical operational installation crippled, most modern Rafale were shut down, and state-of-the-art S-400 battery was destroyed. The enemy was literally on its knees much before we could imagine. Ladies and gentlemen, what the world witnessed in May 2025 was not achieved overnight, but acquired through our transformative modernization undertaken within past 4 to 5 years. Accordingly, we realigned our operational doctrine, concept, and strategy, keeping in view the limited fiscal space and technological option. PF vigorously pursued a very aggressive, innovative, and practicable strategy of modernization. We inducted and operationalized numerous advanced combat and combat support capability along with niche technology in a record time. The smartly executed homegrown kill chain was developed under the ambit of newly established National Aerospace Science and Technology Park, commonly known as NASTAP. No doubt, establishment of this strategic setup of national significance has ensured that our indigenous process remain enduring and leading to robust defense mechanism. I would like to share with this esteemed gathering that the range of capability at NASTAP expanding at an unprecedented time frame. It is heartening that a host of indigenous projects are still in the pipeline that are being vigorously pursued following aggressive timelines. I salute each and every member of Pakistan Air Force for their professionalism and hard working during testing time. No doubt you fought aggressively in synergy with sister services, and the entire nation is proud of your courage and bravery.
I also commend all branches of Pakistan Air Force for their outstanding contribution during MARKA-E-HAQ. In particular, I appreciate the relentless effort of engineering branch that ensured high state of readiness for our platform and combat support system. Likewise, sport branch worked tirelessly to ensure that every operational requirement was timely fulfilled all across and throughout. Administration branch spearheaded a numerous effort to support the deployment, ensuring that the PF personnel could operate in comfort with focus across all our bases and remote locations. Entire C4I branches deserve appreciation, which acted as a linchpin to networked and integrated employment of Pakistan Air Force. Our communication network and digital connectivity was redundant as well as resilient. It serves as a backbone for our integrated employment capability during operation. Security branch deserves special appreciation. Notwithstanding the prevailing challenging security situation, it ensured foolproof security of our bases, remote location during deployment all across the country. Undoubtedly, this victory also reflects great credit on the firm resolve of our national leadership. Alongside well-executed tri-service synergy under full support of Field Marshal Sayyid Asim Munir. While celebrating this success with humility, we singularly remain focused on preparing hard for the future challenges. To uphold the national pride, if our sovereignty is challenged, ever engaged. On this historic occasion, I must make a special mention of our Shahada. Indeed, we are indebted to their supreme sacrifice, matchless contributions, and selfless devotion, which will always be remembered with great admiration. No doubt, they are alive in our hearts and will continue to shine in the glorious history of Pakistan Air Force. MARKA-E-HAQ has renowned our ancestral spirit of sacrifice, and inshallah, Pakistan Air Force will live up to the expectation of Pakistan's brave and resilient people. I assure that Pakistan Air Force will always remain a symbol of pride for this great nation. May Allah Almighty guide our endeavor to be the enduring guardian of Pakistan. Pakistan Air Force, Zindabad, Pakistan, Paindabad. मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, अब आपके सामने मिली नग़मे पेश करने के लिए आ रहे हैं हाफ़िज़ा रोशान रसूल और फ्लाइट लेफ्टिनेंट तैमूर ज़फ़र। उनके साथ होंगे फ़िज़ाइया स्कूल्स एंड कॉलेजेस के तलबा और तालिबात। ऐ वतन प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन। तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया पुरनूर, तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया पुरनूर। अज़्म मेरा कभी मेरे इरादे हैं ग़य्यूर, मेरी हस्ती में आना है, मेरी मस्ती में शाऊर। जहाँ फ़िज़ा मेरा तख़य्युल है तो शीरीं है सुख़न, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन। मेरा दिल तेरी मोहब्बत का है, जान बख्श
यार, मेरा दिल तेरी मोहब्बत का है जान बख्श यार, मेरा सीना तेरी हुर्मत का है संगीन फिसार, मेरे महबूब वतन तुझ पे अगर जान हो निसार, मैं ये समझूंगा ठिकाने लगा सरमाया तुम, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन। Ladies and gentlemen, Chief of the Air Staff, Air Chief Marshal Zahir Ahmed Babar Sidhu, Nishan-e-Imtiaz Military, Hilal-e-Jurrat, is the highest decorated war hero for MARKA-E-HAQ. He planned and executed PF's air campaign by leading from the front. In recognition of his exceptional national services, Government of Pakistan has awarded Hilal-e-Jurrat for exercising visionary leadership, unwavering resolve, and operational acumen that remained pivotal to the resounding success of PAF during MARKA-E-HAQ Bunyanum Marsus. As a token of gratitude from all ranks of Pakistan Air Force, Vice Chief of the Air Staff would present a memento to Air Chief Marshal Zahir Ahmed Babar Sidhu, Nishan-e-Imtiaz Military, Hilal-e-Jurrat, Chief of the Air Staff, Pakistan Air Force, for his strategic farsightedness and charismatic leadership during the testing times. With this, we come to the conclusion of today's ceremony. Headquarters, Islamabad. वाह, पहाड़ों में चपली कबाब। आलिया, पहाड़ दिल की सुनते, बोल के तो देखो। अरे किल्लू, मसूड़ों में दर्द है कोई हल? कोलगेट हर्बल नेचुरल है, लौंग, नीम, यूकलिप्टस और पुदीने वाला कोलगेट हर्बल दांत मसूड़े सेहतमंद बनाए। कोलगेट हर्बल मजबूत दांत सेहतमंद मसूड़े नेचुरली। दुनिया के तमाम बड़े शहरों से बर वक्त पहुंचा रहा है हर खबर बोल न्यूज। This headline news is brought to you by दुश्मन की शर्मनाक शिकस्त का दिन, मार्का-ए-हक को 1 साल मुकम्मल। पाक अफवाज ने भारतीय घुमंड को पाश पाश किया। मार्का-ए-हक ने कौम को एतमाद और क़ुव्वत दी। पाक फ़ज़ाई ने हालिया तारीख की सबसे बड़ी फ़ज़ाई जंग जीती। मुसल्लह अफवाज की अजीम कामयाबी की दुनिया मोतरफ़। अफवाज पाकिस्तान ने खुसूसी पैगाम में कहा है कि मार्का-ए-हक में दुश्मन ने पाकिस्तान की क़ुव्वत और फैसला कुन सलाहियत का मुशाहिदा किया। दुश्मन को आइंदा हर मुहिम जोई का जवाब इससे भी ज़्यादा सख्त होगा। पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, जबकि इसकी मुसल्लह अफवाज ज़िम्मेदाराना और पुख्ता स्ट्रेटजिक सोच की हामिल हैं। पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की हर तैयारी, हर कोशिश और हर सलाहियत का महवर खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और सलामती का फ़रोग़ है। मार्का-ए-हक का 1 साल मुकम्मल होने पर ISPR की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर 2 बजे होगी। मार्का-ए-हक का हक साल मुकम्मल। एक पाक फ़ज़ाइया को खराज तहसीन पेश करने के लिए एयर हेडक्वार्टर्स में शानदार तकरीब। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की पाक फ़ज़ाई के जवानों को कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा, पाक फ़ज़ाई ने भारतीय जारहत का भरपूर और मुँह तोड़ जवाब दिया।
भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को शदीद नुकसान पहुंचाया। दुनिया के सरफहरिस्त लड़ाका तैयारों को खाक में मिलाया। पाकिस्तान ने भारत को गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की थी। भारतीय पहलगाम वाक़े का बगैर सबूत इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया। श्रीनगर से भंडार तक पाक फ़ज़ाई ने दुश्मन को सबक सिखाया। पाकिस्तान के साइबर शाहीनों ने दुश्मन की साइबर सिक्योरिटी को तबाह किया। भारतीय फ़ज़ाई को इबरतनाक और तज़लील से भरपूर शिकस्त दी। जब कौम यकजा हो जाती है तो दुनिया की कोई ताकत उसकी बुनियादों को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। मार्के-हक में कौम का इत्तेहाद हमारी सबसे बड़ी ताकत साबित हुआ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का पैगाम, कहा फील्ड मार्शल की क़यादत में दुश्मन को फ़ैसला कुन जवाब दिया। पाकिस्तान ने अपना हक़ दिफ़ा इस्तेमाल करते हुए जारहत का मुतवाज़न फ़ैसला कुन जवाब दिया। भारतीय जंगी तैयारों समेत मुख्तलिफ अस्करी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया गया। पाकिस्तान ने दुनिया को वाज़ेह पैगाम दिया कि वो अपनी खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक रोज़ा दौरा गिलगित बल्दिस्तान, गवर्नर और वज़ीर आला से अलहदा मुलाकातें। गिलगित बल्दिस्तान में जारी तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त, सूबाई अमन अमान की सूरत हाल और दीगर सूबाई उमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म गिलगित बल्दिस्तान के लिए काबिल तजदीद तवानाई, सेफ सिटीज़, लैपटॉप स्कीम और यूथ बिजनेस एग्री लॉन स्कीम का इफ्तिताह और गिलगित बल्दिस्तान में 4 दानिश स्कूल्स का संग बुनियाद रखेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और फ्रांसीसी सदर एमेनुएल मैक्रोन के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू। ईरानी सदर ने मुत्तहदा अरब अमीरात पर हमलों की खबरों को मुस्तरद कर दिया। कहा ईरान किसी भी फौजी कार्रवाई का बाकायदा ऐलान करता है। मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि ईरान ने अमरीका के साथ 2 मरतबा मुज़ाकरात किए, मगर अमरीका ने मुज़ाकरात के दौरान पीठ में छुरा घोंपा। वाशिंगटन ने सफारतकारी के रास्ते को धमकियों, दबाव और पाबंदियों की तरफ मोड़ दिया है। हर बार बातचीत के साथ साथ ईरान पर फौजी कार्रवाइयाँ भी हुईं। मुज़ाकरात के लिए जंग का खात्मा और मुस्तकबिल में जारहत ना होने की ज़मानत ज़रूरी है। अमरीकी नाकाबंदी ने ख़ित्ते के इस्तेहकाम को मुतासर किया। आबनाए हरमुज़ की मुकम्मल बहाली के लिए अमरीका को पाबंदियाँ ख़त्म करना होंगी। ईरान से मुआहदे के करीब हैं। यकीन है कि अभी जंग ख़त्म करने का बेहतरीन मौका है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा देखते हैं मुआहदे से मुताल्लिक आगे क्या होता है। विक्टोफ और जैरेड कुश्नर को मुज़ाकरात के लिए भेजने का इम्कान नहीं। ये मुमकिन है कि अगले हफ्ते दौरा चीन से पहले मुआहदा हो जाए। वाशिंगटन ईरान पर संजीदा इक़दाम कर रहा है और सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए है। ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमरीका के साथ पैगामात के तबादले की तस्दीक कर दी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा है कि जंगबंदी की अमरीकी तजावीज़ के साथ इन पैगामात के मतन का भी जायज़ा लिया जा रहा है। अभी ईरान ने अमरीकी तजावीज़ का बाज़ाब्ता जवाब नहीं दिया है। ये जवाब जल्द पाकिस्तान के जरिए अमरीका को भेज दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जंगबंदी तजावीज़ एक सफ़े तक महदूद रह गई हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, 1000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,73,000 की सतह अबूर कर गया। और महकमा मौसमियात ने आज से 11 मई के दरमियान नए हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया। सिंध बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में पारा 40 से 50 डिग्री तक जाने का इम्कान। जनूबी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के चंद मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत 43 से 47 तक जाने का खदशा। कराची में दर्जा हरारत 35 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई की गई।
वो कढ़ाई से भी फाइट कर लेगा। कौन? ब्राइट, क्योंकि नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला गहराई से दाग निकाले। एक नए अज़्म के बोल, इत्तेहादो यगानगत के बोल, अवाम के ख्वाबों के बोल, पाकिस्तान की तामीर, तरक्की और इस्तेहकाम के बोल। बोल पाकिस्तान के साथ। 4 बजते ही सारे सिस्टम हैंग, दिमाग, मूड और ये दोस्त भी। थोड़ा लैग कर रहा है, अभी बताती हूँ। नेस्कैफे कोल्ड 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 कॉफी के। वेलकम बैक गाइस, अब कुछ कर लें। नेस्कैफे कोल्ड 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 कॉफी की किक। अब नहीं, फ्रॉम नेस्ले। हम खबर देंगे विफाकी आईनी अदालत का हुकूमत के खिलाफ पहला बड़ा फैसला। इनकम टैक्स कानून का सेक्शन 7E कलअदम करार दे दिया गया है। सेक्शन 7E की बहाली के लिए दायर FBI की अपीलें खारिज कर दी गई हैं। सेक्शन के तहत FBI के उठाए गए तमाम इकदाम भी कलअदम करार दे दिए गए हैं। इस पर मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे नुमाइंदा बोल न्यूज़ जुल्करनैन इकबाल से। जुल्करनैन, शेख से मुतालिक बताइएगा और फैसले में क्या कहा गया है। देखिए, सेक्शन 7E इनकम टैक्स कानून में तरमीम करके शामिल किए गए थे, जिसके तहत शहरियों के पास जो ऐसे प्लॉट्स थे जो सिर्फ उन्होंने खरीद के रखे हुए थे, किसी इस्तेमाल में नहीं थे, कोई तजारती सरगर्मी उस पर नहीं हो रही थी, उनके ऊपर भी टैक्स लागू किया गया था। जिस टैक्स को चैलेंज किया गया मुल्क भर की हाई कोर्ट्स में, ताहम पेशावर हाई कोर्ट, बलोचिस्तान हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्शन 7E कलअदम करार दिया था। लाहौर और सिंध हाई कोर्ट ने इसको बरकरार रखा था। FBI की अपीलें थी कलअदम करार देने के खिलाफ और शहरियों की अपीलें थी इसको कानून के मुताबिक करार देने के खिलाफ, और FBI की अपीलें वफाकी आईनी अदालत ने खारिज कर दी हैं और सेक्शन 7E को आइन के खिलाफ करार देते हुए इसको आइन से मुतसादिम करार दिया और इसको कलअदम करार दे दिया। साथ ही साथ अदालत ने FBI की जानिब से उठाए गए तमाम जो इक़दाम हैं सेक्शन 7E के तहत, उनको भी कलअदम करार देते हुए कहा है कि उनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। ये मुख्तसर फैसला है जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जो चीफ जस्टिस है वफाकी आईनी अदालत के, उनकी जानिब से पढ़कर सुनाए गए हैं और इसकी जो तफसीली फैसला और तहरीरी वजूहात हैं वो अदालत की जानिब से बाद में जारी की जाएंगी। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन अपडेट करने के लिए। और चीफ जस्टिस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 14 मई को तलब कर लिया है। इजलास में जजेस के खिलाफ ज़ेर इल्तवा शिकायत का जायजा लिया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक 6 जजेस के खत भी ज़ेर गौर आएंगे। चीफ जस्टिस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 14 मई को तलब कर लिया है। इजलास में जजेस के खिलाफ ज़ेर इल्तवा शिकायत का जायजा लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक 6 जजेस के खत भी ज़ेर गौर आएंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने गुटखे की फ़रोख्त को जुर्म करार दे दिया है। आपको बताते चलें कि गुटखा फूड की तारीफ में आता है, इसकी फ़रोख्त या ज़ख़ीरा अंदोज़ी जुर्म है। आपको अपडेट करें, गुटखा कैंसर का बायस बनने वाली इंतहाई मुज़र शय करार दी गई है। अदालती फ़ैसले में कहा गया है कि गुटखा कैंसर का बायस बनने वाली इंतहाई मुज़र सेहत शय है। अदालत ने गुटखा केस में पंजाब फूड अथॉरिटी के इख्तियारात की वजाहत कर दी है। फूड सेफ्टी अफसर रिहायशी मकान पर छापा मारने का कानूनी इख्तियार रखता है। मज़ीद तफसीलात हासिल कर लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, बताइएगा। बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अंजर रफीक ने गुटखा को फूड आइटम करार देते हुए इसकी फरोख्त जुर्म करार दे दी है। अदालत ने कहा है कि गुटखा फूड की तारीफ में आता है और उसकी फरोख्त या ज़ख़ीरा अंदोज़ी जुर्म है। अदालत ने इसी बुनियाद पर मुल्ज़िम मोहम्मद शाहिद की पूरी जमानत जो है मुस्तरद कर दी है। अदालत ने गुटखा के 10,000 साशे बरामद होने के हवाले से दायर मुल्ज़िम की पूरी जमानत खारिज करते हुए अपने तफसीली तहरीरी फैसले में कहा है कि गुटखा कैंसर का बायस बनने वाली इंतहाई मुज़र सेहत है। गुटखा फूड की तारीफ में आता है और उसकी फरोख्त या ज़ख़ीरा अंदोज़ी जुर्म है। जबकि अदालत ने गुटखा केस में पंजाब फूड अथॉरिटी के इख्तियारात की भी वजाहत करते हुए कहा है कि फूड सेफ्टी अफसर
रहायशी मकान पर छापा मारने का कानूनी इख्तियार रखता है। कानून में इमारत की तारीफ वसी है जिसमें रहायशी घर भी शामिल है। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की एक रोज़ा दौरे पर गिलगित बल्तिस्तान आमद। गवर्नर सैयद मेहदी शाह और निगरान वज़ीर आला ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया है। वज़ीर-ए-आज़म की गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान निगरान वज़ीर आला से अलग अलग मुलाकातें भी हुई हैं, जबकि तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त और अमन अमान की सूरत हाल और दीगर उमूर पर गुफ्तगू की गई है। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे फ़ात चौधरी से। फ़ात बताइएगा। देखिए, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज एक रोज़ा दौरा गिलगित बल्तिस्तान के लिए कुछ देर पहले गिलगित पहुंचे हैं। गिलगित पहुंचने पर गवर्नर सैयद मेहदी शाह और निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। इस दौरे में वज़ीर-ए-आज़म के हमरा अहम वफाकी वज़रा भी शरीक हैं। वज़ीर-ए-आज़म की गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान और निगरान वज़ीर आला से अलहदा मुलाकातें भी हुई हैं। इन मुलाकातों में गिलगित बल्तिस्तान में जारी तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त, सूबाई अमन व अमान की सूरत हाल और दीगर सूबाई उमूर पर गुफ्तगू हुई। बादज़ा वज़ीर-ए-आज़म गिलगित बल्तिस्तान के लिए काबिल तजदीद तवानाई, सेफ सिटी, लैपटॉप स्कीम और यूथ बिजनेस और एग्री लोन स्कीम का इफ्तिताह और गिलगित बल्तिस्तान में 4 दानिश स्कूल का संगे बुनियाद भी रखेंगे। जी बहुत शुक्रिया फ़ात अपडेट करने के लिए। मणिपुर में मोदी हुकूमत की सफाकियत उरूज पर अवाम बदतरीन तशद्दुद का शिकार है। भारतीय फोर्सेस के बढ़ते मज़ालिम मणिपुर में आज़ादी की तहरीकें ज़ोर पकड़ गई हैं। अप्रैल और मई 2026 में भारतीय फोर्सेस से झड़पों के बायस हालात कशीदा हैं। एहतजाजी मुजाहरे शुरू हुए तो भारतीय फोर्सेस ने सीधे फायर खोल दिए। पुरतशद्दुद एहतजाज और जलाओ घेराव के बाद मणिपुर में फिर कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है। मणिपुर में मोदी हुकूमत की सफाकियत उरूज पर है। अवाम पर बदतरीन तशद्दुद किया जा रहा है। मार्का-ए-हक की तारीखी फतह बलोच अवाम जोश जज्बे से सरशार है। आपको अपडेट कर रहे हैं। पाक फौज की भरपूर सताइश। बलूचिस्तान समेत मुल्क भर के अवाम का पाक फौज को खराज तहसीन। पाकिस्तान ने न सिर्फ भारत के राफेल गिराए बल्कि गुरूर भी खाक में मिला दिया। ट्रंप ने भी तस्दीक की कि पाकिस्तान ने भारतीय तैयारे मार गिराए। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, किसी ने जारहत की तो फिर मुंह की खाना पड़ेगी। आपको अपडेट कर रहे हैं। मार्का-ए-हक की तारीखी फतह बलोच अवाम जोश जज्बे से सरशार हैं। पाक फौज की भरपूर सताइश की गई। इस साल मोदी का मुंह काला हुआ है दुनिया के इंटरनेशनल मीडिया पे, जो उसको रसवाई का सामना करना पड़ा है। अगली दफा वो फिर पाकिस्तान के साथ कोई छेड़खानी करेगा तो इंशाल्लाह हम पाकिस्तानियों को ये उम्मीद है और हम पाकिस्तानियों के पाकिस्तान पे फख्र है कि दोबारा वो इंडिया को इस तरह रुसवा करेगा, मोदी को रुसवा करेगा, क्योंकि हम है बुनियानुल मरसूस। बुनियानुल मरसूस के 1 साल मुकम्मल होने पे पाक फौज को खिराज तहसीन पेश करते हैं कि इन्होंने न सिर्फ भारत के 6 राफेल गिराए बल्कि जो इनका गरूर था वो जो है ना वो जमीन बोझ कर दिया है। 9-10 मई हमने इनके गरूर खाक में मिलाया। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके जम्मू कश्मीर के अंदर तो हमने वो भी नाकाम बनाया। उनके जो प्रॉक्सीज है वो भी नाकाम बनाया। उनके गरूर भी खाक में मिलाया। न सिर्फ बलूचिस्तान के लोग बल्कि पूरे पाकिस्तान के लोग इस पे पाक फौज को खिराज तहसीन पेश करते हैं। 9 और 10 मई को सारी दुनिया को मैं याद दिलाऊंगा कि ऐसा मुल्क जो अमन नहीं चाहते हैं, जो जुल्म चाहते हैं, तो हमारे पाक फौज और सिपहसालार की अजमत से उनको ये पैगाम और 9 मई और 10 मई को भी दिया है, बाद में भी देंगे। हमारी तारीख का एक अहम दिन है जो हम सारे पाकिस्तान जो जोश और खरोश से जो इंशाल्लाह मनाएंगे। इसी दिन हम हमारे जो जवान हैं, जय पाक फौज के जितना भी जवान है, एयरफोर्स के शाइनों ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिए हैं और हम पाकिस्तान के फौज के साथ जो है शाना बाशाना खड़े इंशाल्लाह खड़े रहेंगे आखिरी दम तक। एफसी की मौसर इस्लाहात के मज़बूत समरात सामने आने लगे हैं। पाकिस्तान में मौशी और सनती तरक्की का नया दौर शुरू। मुल्क में सरमायाकारी और सनती तरक्की में नुमाया पेशरफ्त हुई है। SIFC के ताउन से 7 नई सीमेंट फैक्ट्रियों के क़याम की राह हमवार हुई है। SIFC ज़राई, फार्मिंग, लॉजिस्टिक, रेलवेज़ और दीगर मनसूबों में सरगर्म है। SIFC के मौसर इस्लाहात के मज़बूत असरात सामने आने लगे हैं। Worked on strategic connectivity in freight corridors, the modernization of Pakistan railways and expansion of our motorway network.
फारूक सत्तार कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अगले और मौजूदा और साबका सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए साजिशों के, लेकिन और फिर ये तो खुले दुश्मन की बात है। मुल्क के अंदर के दुश्मन की बात करें तो आप गौर करें, ये मार्का-ए-हक से पहले अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ और हमारी सियासी हुकूमत के खिलाफ भी सोशल मीडिया पर जो प्रोपेगेंडा हो रहा है, एक आसाब शिकन, आसाब को थका देने वाला प्रोपेगेंडा हो रहा था। मजबूत आसाब को कायम रखना, फिर अपने से 10 गुना बड़े दुश्मन के चैलेंज को कबूल करना और बिलाखिर हिमालय के सूरमाओं के गुरूर को खाक में मिलाना, ये मैं समझता हूं कि अफवाज पाकिस्तान की जो सलाहियतें हैं